everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. Embrace the iExamBee learning experience with us. Don't forget to subscribe to our YouTube channels. This is Legal Bee, which is the exclusive law channel of iExamBee, on which we keep on bringing the YouTube videos relating to strategic preparation for different competitive examinations after law, the major legal updates, content for all these exams, questions and whatnot. कोई भी queries हो, you can reach out to us by any of the following methods. And also आज के वीडियो में मैं UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाली हूँ. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आप इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए एंड पोस्ट योर क्वेरीज ओवर देयर. You will definitely get a good guidance from our side. We will try our level best. So whatever queries are there relating to whatever discussion I am making in this video, उससे related भी अगर आपको कोई clarification चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you can fill the Google form. So UGC NET, JRF, the same examination is there for which you can appear and you can qualify both, or you can qualify NET depending upon your cutoff. ये एग्ज़ाम होगा जून में. सो जून में एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड हम एग्ज़ाम पैटर्न एंड डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, फिल्म फॉर्म्स आर नॉट आउट येट. जैसे ही आ जाएंगे आई विल अपडेट यू, बट द एग्जामिनेशन इज फिक्स्ड इन द मंथ ऑफ जून एंड डिसम्बर. सो द जून साइकिल एग्जाम इज नियर. एस योर प्रेपरेशंस, गेयर अप योर प्रेपरेशंस. स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के डिस्कशन से. द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, दैट इज दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT मोड कहा जाता है उसे. इसका क्या मतलब हुआ कि फिजिकली आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, पूरी तरीके से आपका पेपर ऑनलाइन है. पेपर 1 भी और पेपर 2 भी. इट विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. यू हैव टू सॉल्व इट and it is in MCQ format only. There is no descriptive type of question. You have multiple choice questions and both of the papers. First paper, that is the general relating to teaching and research aptitude. Second paper is relating to your subject. So for you people, the law people, you have the law subject. And the weightage, if you will see, the marks for first paper is 100 and second paper is 200. Double the number of questions, double the number of marks as well. 50 questions for first paper, 100 questions for second paper. Each question carries 2 marks and there is no negative marking. And the best part of this paper is that it is in a continuous process. 3 hours you have to solve 2 papers. It is upon you that which you want to solve first. Many students have this confusion कि पहले उनका paper 1 submit होगा and then only they will be able to see the second paper. But it is not like that. If you are comfortable with your own subject, if you want to start with it, you can start with paper 2 as well. And you can do the paper 1 in the last. And time division भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. अगर आपको लॉ को ज़्यादा टाइम देना है, पेपर 1 को कम देना है, या आपको लग रहा है पेपर 1 में मुझे ज़्यादा टाइम लग सकता है, लॉ में मैं जल्दी सॉल्व कर लूँगा क्वेश्चंस, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं. इट इज़ अपॉन यू. एंटायर पेपर इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू. इन 3 hours यू हैव टू सॉल्व इट. नाउ लेट अस सी द सिलेबस ऑफ द पेपर. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDFs अटैच किए हुए हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं. एंड फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर PDFs आर देयर, so you can check it out. The detailed syllabus is there. I've taken these cuttings from the PDF itself. First unit is your teaching aptitude, all the basics relating to teaching, levels of teaching. There are some levels, यहाँ से हमेशा questions आते हैं, so आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. पूरा theoretical part है, basic teaching से related. टीचिंग एंड लर्निंग एड्स क्या है, लर्नर कौन होता है, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड, स्वयं प्रभा, मॉक, all these things are there in your syllabus. Even the evaluation systems, उसमें CBT mode भी है. So ये सारी चीज़ें आपके teaching aptitude में आती हैं. And the best part of this exam is that they give you a detailed syllabus. They will not ask you anything which is not mentioned here. Everything is there within the syllabus. They will ask you from that only. The important areas will be focused, no doubt in that. Second unit is your research aptitude. Research aptitude में basic research क्या होता है, which are the different kinds of research, what is the research process, which are the different processes or steps in the research, what are the tools which you can use for research, ICT and research ethics, styles of referencing, citation. ये सब basic research aptitude. ये भी easy है, ध्यान में रहता है अगर आपने अच्छे से इसकी थ्योरी समझ ली तो. कॉम्प्रिहेंशन कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड है. कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा एंड यू हैव टू सॉल्व इट. तो इसको आपको प्रैक्टिस कर करके ही सीखना होगा
टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ. Fourth unit, communication, completely theoretical, and you can understand it. It's a very logical subject and an interesting one. Basic communication tools also you can have here. Then verbal communication, non-verbal communication, group communication. In that, classroom communication is very important one. Then mathematical reasoning and aptitude, the fifth unit. Basic maths is there. Those who have a hand in mathematics can score well over here. But those who don't have may find it difficult. काफ़ी law students का maths अच्छा नहीं होता. But don't worry, this is the basic maths which you have done in your school. Just the thing is that you have to revise everything and practice over here. Percentage, ratio, proportion, speed, distance, time, all these things will be there. Then is the logical reasoning. Logical reasoning थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट अगर आप ऑलरेडी दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पता होगा. सिलॉजिज्म्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर. देन इन दैट इंडियन लॉजिक का एक यूनिट है, थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है, कंप्लीटली थियोरेटिकल है वो भी. इफ़ यू रीड इट यू मे फाइंड दैट दीज टर्म्स आर देयर इन कंप्लीटली इन हिंदी. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि. तो ये वर्ड्स आपने 2-3 बार पढ़ लिए तो आप अक्वेंटेड हो जाते हैं. उनके मीनिंग्स यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रैक्टिस ब्रैकेट्स में. इस तरीके से पढ़ पढ़ के यू विल गेट acquainted. But this unit is important. It is bit vast as compared to the other units, but if you score well you have to go through all the units very well so that you score well in the examination. Data interpretation and information communication technology are the next 2 units. DIs are given to you. 10 मार्क्स का कंपलसरी DI तो रहता ही है. आपको उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दे देंगे, 2-2 मार्क के, वो आपको सॉल्व करने हैं. तो वो DI भी आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा. टाइप्स ऑफ DI ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. दैट इज द वे हाउ यू कैन कवर दिस. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन द थियरी पार्ट. In that abbreviations are also important. Then the basics of internet, email communication हो गया. email आप जिसको send करते हैं तो CC क्या होता है, BCC क्या होता है, for example. इस तरीके के basic चीज़ें हैं. theory है completely. Once you read it, it will be clear to you. Then people development and environment and higher education. ये दोनों units थोड़े से vast हैं. You have a very vast syllabus, but then you can refer the previous year papers and you can focus on the important topics. हमेशा पूछे जाते हैं, उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. थोड़ा सा याद रखने वाला यूनिट है ये दोनों भी. देन लॉ स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो आसान ही है लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एज कम्पेयर टू द अदर्स. फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन होता है, बट आप लोगों के लिए ये एक एडवांटेज है कि आपके लिए ये कम्प्लीटली नया नहीं है. एनवायरमेंटल लॉ आपने पढ़ा होता है, सो यू कैन गो थ्रू इट. ये कुछ गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल, वो सब आपको लर्न करने होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल. Then higher education system, the last unit. This is also interesting. Once you develop your interest, you can go through it and learn it. In this, you have to learn the commissions which were there, how education was established in India, which were the universities which came first, Nalanda, Takshashila. ये सारे थोड़ा सा आपको लर्न करना होता है. लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज करते हैं तो आप ये यूनिट्स में काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. जैसे दूसरे यूनिट्स हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज बन जाता है, और इस एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज है. क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं. आपको लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्वेश्चंस आर लेंदी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉमेमोरेट. सो लाइक दैट दीज यूनिट्स कैन हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग इन द एग्जामिनेशन. Coming to the second paper syllabus. First unit, jurisprudence. Jurisprudence is very, very important. They have specifically provided you schools, sources of law, legal personality. All these things are there. Focus on these areas only. Books and the famous authors and their statements of definition of law, schools, ये सब पे focus कीजिए. Constitutional and administrative law combined unit है. दिस इज़ बट ऑब्वियस, कोई भी एग्जामिनेशन में आपको ये यूनिट तो होता ही है. प्रियम्बल, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, जुडिशरी, देन इलेक्शन कमीशन, जुडिशियल रिव्यू. अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफिक सब पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, यानी कि टॉपिक्स दिए हुए हैं हर एक यूनिट के. यू फोकस ऑन ओनली ऑन दैट. यू डोंट नीड टू गो आउट एंड डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. फोकस ऑन द थिंग्स विच आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस. Public international law and international humanitarian law is a unit.
In that also public international law, the important concepts like sources, definition, extradition, asylum, UN its organs, WTO, then IHL का थोड़ा सा ही पार्ट कवर किया है, कुछ कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ऑल दैट बेसिक. Law of crimes, our favorite IPC. Many exams we are having it. Specifically, they have given you the chapters over here. Basics of IPC, general exceptions, offences against human body, state, property, women, children, public tranquility, drug trafficking, theories and kinds of punishment and victims. बाकी क्रिमिनल लॉ नहीं है आपको, एविडेंस नहीं है, CRPC नहीं है, CPC भी नहीं है आपको, प्रोसीजरल सिविल लॉ भी नहीं है. सो दैट बर्डन इज लेसेंड. Law of torts and consumer protection based one unit is there. In that you have motor vehicle act also and competition act also. यहाँ से क्या एक एक दो ऐसे questions आ जाते हैं. तो ये यूनिट में आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे. सो आप ये सारे टॉपिक्स का बेसिक कवर कर सकते हैं. Torts, basic things which they have provided here, and then some important case laws. Case laws are also asked in this examination. You have to prepare the case laws well. Many case laws are asked in UGC net examination. Then commercial law unit is there. In that you are having contracts, special contracts, sale of goods, partnership, negotiable instruments act, company law. Company law, you can see only these 3 subtopics are there which you have to focus on. Nothing other than this you have to do, and accompanied with case laws. So ये commercial unit भी काफ़ी important हो जाता है because यहाँ पे काफ़ी सारे areas cover हो जा रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आप स्कोर कर सकते हैं. फैमिली लॉ, फ्रॉम हियर ऑल्सो केस लॉज आर आस्क्ड अ लॉट. देन द बेसिक कंसेप्ट्स, डिवोर्स, देन मुस्लिम लॉ डिवोर्स एंड मैरिज कंसेप्ट, सोर्सेज, स्कूल्स, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, UCC, recognition of foreign decrees in India on marriage and divorce, specifically that is provided. Environment and human rights law. Now this is something which will help you when you are studying environment in the first paper. You can also gradually start the law paper over here for environment and human rights. So here also many case laws are there, many judgments and developments are there, and National Green Tribunal उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, या बिल ऑफ राइट्स, या ये आप कुछ कमीशंस देख रहे हैं उससे रिलेटेड, या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, UN के कौन से कॉन्फ्रेंसेस हैं जो एनवायरमेंटल लॉ में भी हैं एंड आपको पेपर 1 के लिए भी पढ़ने हैं. IPR and IT law, they have provided in one unit all the basic IPRs, the conventions from where IPR has come, like Berne Convention and all those you have to do. Then case laws are very important here, different types of IPRs. Then the IT Act, the basic definitions, digital signature, electronic governance, electronic signature, ऐसे कुछ एरियाज उन्हें स्पेसिफिकली आपको दिया है पॉइंट नंबर 9 and 10, तो आप उसी पे फोकस कीजिए. The last one is comparative public law and systems of governance. Now this is something which is not taught in many of the institutions in the LLB course. So you people may get afraid, but don't get afraid. It is something which is an improvised kind of unit. Comparative public law and systems of governance. You can understand this if you have a good knowledge of constitution, and different constitutions are compared over here. Administrative law, separation of powers, rule of law, federalism, all of this. कभी कभी क्या होता है, ये इसके बेसिस पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी दे देते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दैट. So this is something which you have already studied, just it is gathered together and थोड़ा सा उसमें आपको डीप में जाके पढ़ना हो. तो आप ये टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं. अमेंडमेंट्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया, US, साउथ अफ्रीका. तो आपको सिर्फ इंडिया, US और साउथ अफ्रीका के ही अमेंडमेंट पढ़ने हैं. That is the thing which you have to focus on the syllabus. Independence of judiciary they have provided. India, UK and US. Only these 3 areas you have to focus. Federalism, USA, Canada and India. Only like this you have to go ahead with it. An ombudsman concept. Many times the question is asked where it was developed, what is the concept, then in India how it is developed, and so on. So you can download the syllabus from the description for both papers 1 and 2. This is the official link of the website of UGC net. And if you have any queries, we are there to help you out. Don't forget to subscribe and prepare 50% faster with us at our exam.